the normal to the normal to the plane r dot I cap minus j cap plus k cap is equal to 3 r dot 3 I cap plus 2j cap minus k cap plus 5 is equal to 0 r perpendicular to each other. ओके कुछ हमने कल ये टाइप किया था r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0. ओके, इसको अगर हम ओपन करते हैं देन वी विल गेट r डॉट एन माइनस a डॉट एन इज इक्वल टू 0. ओके, सो r डॉट एन इज इक्वल टू, अब ये कोई भी स्केलर क्वांटिटी आएगी बिकॉज दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, लेट दिस बी कैपिटल D. So here this n is a normal vector. So whenever you will get this form, then this is always a normal vector. Okay, we can't say that this is the distance from the origin or not. Okay, because for this to be a distance from the origin, there should be a unit vector. That this is the distance from the origin or not. But this one, this is always a normal vector. Now please try. Good. Good.
Very good, Kush. 8 by 9. Cross inverse 1 by 9. Okay, Kush. Good. This is correct. Now please try this one. Okay, Kush. Root 2 plus j plus k is equal to 2. Very good, Kush. Great. Now next topic we will do type third. Type third is equation of a plane. Equation of a plane. Passing through three non-collinear points. Three non-collinear points. So the point should be non-collinear. ठीक है? अगर collinear होते हैं तो क्या हो जाएगा? Suppose देखिए, अगर हमारी ये 3 points हैं, these 3 are collinear, तो क्या हो सकता है? Infinite number of planes pass हो सकते हैं through these 3 points. ठीक है? एक ये हो गया, एक suppose ये हो गया, एक ये हो गया, next ये हो गया. ठीक है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स विल पास थ्रू द 3 पॉइंट्स. इसीलिए हम कहते हैं कि पॉइंट्स हमारे नॉन कोलिनियर होने चाहिए. सो फॉर दिस वन is it
this is y, and this is z. Okay, and this is origin. Now suppose एक ये plane है हमारे पास. यहाँ हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं. सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया. नेक्स्ट ये हो गया सपोज दिस इज बी. सपोज दिस इज सी. ओके, ये इनके पोजीशन वेक्टर हो गए. These are the position vector, and this is a suppose एक arbitrary point ले लेते हैं. This is R. ये पोजीशन वेक्टर A, इसका पोजीशन वेक्टर B, इसका पोजीशन वेक्टर C. हाँ, हम फाइंड करते हैं सबसे पहले here AB. ठीक है, AB अगर हम फाइंड किया then AB will be B minus A. But okay, and one more thing, these 3 points lie on this plane. एक single plane है, चाहे 3 points हमारे lie कर रहे हैं. ठीक. Next हम find करते हैं one more thing, this one, AC. So AC will be C minus A. Okay, अब now these two are two vectors, AB and AC. इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे कुछ, then क्रॉस प्रोडक्ट हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर देगा. प्रोडक्ट फाइंड करते हैं then we will get a vector which is perpendicular to both A and B. है ना? So ये हमने पहले भी डिस्कस किया था that if a vector is perpendicular to a plane then it will be perpendicular to all the lines or the vectors which are present in that plane. The same definition को थोड़ा सा extend करते हैं. We can say if a vector is perpendicular to any of the vector on the plane then it is perpendicular to the plane. So अगर ये इन दोनों vectors के perpendicular है this one, तो ये फिर plane के भी perpendicular होगा. ठीक है, तो अगर हम AB क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, if we are finding AB cross product with BC, so what we are getting B minus A cross product C minus A. You get this. Okay, now we have this R. हम क्या करते हैं, A to R एक वेक्टर फाइंड कर लेते हैं AR, which is R minus A. So R minus A, इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर देते हैं विद दिस वन B minus A क्रॉस प्रोडक्ट C minus A, so रिजल्ट क्या आना चाहिए, this will be equal to and we are finding the vector form. This is vector 0. Very good. Okay, ये हमारी vector form. So this is equal to 0. So this is the equation of a plane which passes through 3 non-collinear points. So we need to find B minus A cross product C minus A. And we need to find the dot product with R minus A. ठीक. Next हम इसमें बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म की. कार्टेशियन फॉर्म, यहाँ कार्टेशियन फॉर्म बहुत काफी सिंपल है. ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में हमें क्या करना है, A हम R से स्टार्ट करते हैं. R हम लेट कर लेंगे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप. A स्टार A हम कर लेते हैं x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप. B हम कर लेते हैं x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप. C हम कर लेते हैं x3i कैप प्लस y3j कैप प्लस z3k कैप. ओके, अब हमें क्या करना है, जस्ट वी नीड टू पुट द वैल्यू ओवर हियर. क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, डॉट फाइंड करेंगे, और उसको जब हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे देन वी विल गेट द सेम इक्वेशन व्हिच वी गेट फ्रॉम हियर. ठीक है, ये लिख रहा हूं x1 is x1 y minus y1 z minus z. x फिर ये क्या था, b minus a, तो x2 minus x1 आ गया, y2 minus y1 आ गया, z2 minus z1 आ गया. ये क्या है, c minus है, तो x3 minus x1 आ गया, y3 minus y1 आ गया, and z3 minus z1 again. This is equal to 0. This is the Cartesian form. Clear वो कुछ?
Okay, so Kush, please note down this, then we will start the questions. And one thing कुछ अगर आप वेक्टर फॉर्म फाइंड कर रहे हैं तो सिर्फ आंसर यहाँ नहीं लिखना है, यू नीड टू सॉल्व दिस. ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म करें तो इस क्रॉस प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, फिर डॉट करना है, फिर वही r डॉट n इज इक्वल टू d वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है. सॉल्व. अदरवाइज इफ यू आर यूजिंग द कार्टेशियन फॉर्म तो यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा. यू नीड टू सॉल्व द डिटरमिनेंट. दिस क्वेश्चन फाइंड द, सो इट्स योर चॉइस. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कार्टेशियन में आपने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, जब फाइनली इक्वेशन आ गई तो उसके साथ वेक्टर फॉर्म भी लिख दिया, है ना. दैट डिपेंड्स ऑन यू. हो सकता है ये आपको थोड़ा सा लेंथी लगे, तो यहाँ से कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the point, passing through the point. Point A is 2, 2, -1. Point B is 3, 4, 2. And C is 7, 0, 0. Okay, find both Cartesian form as well as the vector form. Okay, Kush, you get the answer. 5x plus 2y minus 3z is equal to 17. Very good, Kush. This is correct.
And next one is first question with true. That's correct. Kush, for the second one, okay, please solve it. If from a point P, coordinate are ABC, perpendiculars P and PB, PA and PB are drawn to the YZ and ZX plane. Find the equation of the plane. Find the equation of the plane. Find the equation of the plane OA. Okay. If from this point perpendiculars are drawn on YZ and ZX plane, find the equation of the plane OAB. Please try this.
Very good question. This is correct. Now question बताओ. Show that the 4 points. Show that the 4 points. 4 points. 0, -1, -1, -4, 4, 4, 4, 5, 1, and 3, 9, 4 are coplanar. Are coplanar. Find the equation of the plane. Find the equation of the plane containing them. Okay. So, Kush, what is meant by coplanar? That means these 4 points will lie in the same plane. ओके, एनी आइडिया कुछ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने अभी तक सारे क्वेश्चंस खुद किए, ठीक है, आपको हेल्प नहीं चाहिए थी. तो दैट्स व्हाई आई थिंक यू कैन डू दिस क्वेश्चन आल्सो. बट आप शेयर कर सकते हैं आंसर कैसे कर सकते हैं सो. सर 3 पॉइंट लेके अगर हम इक्वेशन निकाल दे और फिर फोर्थ से अगर देख ले कि सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है, प्लीज ट्राई दिस.
Kush, good, but is it not 5x? 5x minus 7y? Okay, Kush, very good. Okay, Kush, then we will start the next type. Next is intercept form of a plane. Okay, intercept form of a plane. So last year जैसे आपने straight line किया था वहाँ पे intercept form था, intercept form of a straight line. Same thing is in the plane. Means जो भी intercept plane cut कर रहा है वो आपको given हो गए. Okay. So for example, we have this x, y, and z axis, x, y, and z, and this is the this is the this is B, this is C, or we will take this is A, this is B, and this is C. This A is A comma 0 comma 0. This B is 0 comma B comma 0, and C is 0 comma 0 comma C. Okay, so what will be given in the question? Intercept given. Okay, so that means this plane, this ABC plane, cut an intercept A on the x-axis, B on the y-axis, and C on the z-axis. That's why the coordinate we have taken as A comma 0 comma 0, 0 B 0, and 0 0 C. Okay, now we will do the proof of this. So different methods we have. First method, 3 points given here by the previous type, by the previous formula, we can find the equation of the plane. कुछ भी नहीं करना इसमें. Next और भी methods हैं, जैसे हमने ये let कर दिया, let the equation of the plane be, let the equation of the plane be, let the equation of the plane be, the plane be ax plus by plus cz is equal to d. Okay, so ये कुछ न्यू नहीं. अगर हम बात करें r dot n is equal to d, so I'm again saying that this d is not the distance from the origin. ठीक है, ये distance from the origin से जब होगा when this is a unit vector. So same type है, कुछ भी नहीं. ये हमारा वेक्टर फॉर्म था, इसको हमने कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, ये कहाँ से आया था? ये वहां था, r minus a dot n is equal to d, is equal to d. ठीक है, so हमने सिर्फ कार्टेशियन में कन्वर्ट किया है. We have done nothing new. Okay, now we have this one. अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास 3 पॉइंट्स है. ओके, ये 3 पॉइंट्स यहाँ पुट करते हैं. वी विल फाइंड द वैल्यू. पुट फर्स्ट पॉइंट a, 0 इन फर्स्ट, दिस बी वन इन फर्स्ट. तो ये कितना हो जाएगा? a into a plus 0 is equal to d. So what we will get? We will get a is equal to d by a. Similarly we will get, ठीक है, सेकंड पॉइंट जब पुट करेंगे we will get b is equal to d by a, and we will get c is equal to d by c. Put these values in first. Put these values in first. Okay, in place of a, put d by a x. In place of b, okay, this is d by b. Y by b plus c into d by c is equal to d. Divide this complete with d, so you will get x by a plus y by b plus, where we have z here, c near z, plus z by c is equal to 1. So this is the intercept form of the plane. ठीक है, this is similar to which you have done last year for the straight line. So वो भी x by a plus y by b is equal to 1 था, and this is a plane, so we have a z axis. Take a wish, please note down this, then we will try some questions. Okay, question, then try the question. Write the
write the equation of the plane whose intercept on the coordinate axis are -4, 2, and 3. Please try the plan. Good question. -3x 4y2. Which issue है कुछ? Answer is not correct for the first one. ठीक है? Answer is -3x plus 6y plus 4z is equal to 12. एक बार check कीजिए इसको. Okay. Yes. Try the second one. Six, 4, and -3. Very good. Try the next one, Kush. Show that the equation of the plane is x by p plus y by q, y by q plus z by r is equal to 3. Please try this. Okay, Kush, great.
ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कुछ। प्लेन पासिंग थ्रू like this. This was 4, so this is 5th. Plane passing through the intersection of two planes. Okay. So for example, we have one plane here. In plane we have this. Next plane we have this. Suppose this plane is P1. Okay, this is P2. Now plane P1 and P2 are intersecting at this. There's a line of intersection. From this point of intersection, line of intersection, our next plane is passing. For example, this one. Okay, next plane is passing this one. This is P3. So we need to find the equation of this plane P3. So suppose P1 plane have the equation R dot N1 is equal to D1. Okay, I'm again saying that D1 is not the distance from the origin because this is not a unit vector. P2 is R dot N2 is equal to D2. Again, D2 is not the distance from the origin, but N1 and N2 are the normal vectors. Now the equation of P3 will be given by R dot N1 plus lambda into is equal to D1 plus lambda T2. Okay, this is the equation of plane. ठीक है, so हमें क्या करना होगा, we need to find this value of lambda. So in this type of question हमेशा आपको given क्या होगा, plane की equations given होगी two planes की, and एक third condition given होगी to find the value of lambda. हमेशा एक third condition होगी to find this value. ठीक है कुछ? So please note down this and then फिर हम questions try करते हैं. इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी लिख देते हैं ना, कार्टेशियन फॉर्म, बट बेटर इसको वेक्टर फॉर्म से लर्न करना है, कार्टेशियन थोड़ा सा लेंदी है. तो वहाँ क्या था कि अब हमारे पास टू इक्वेशन क्या है, ax1 सॉरी a1 into x plus b1 into y plus c1 into z is equal to d1. We can say d1. नेक्स्ट है हमारे पास a2x plus b2y plus c2z is equal to d2. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगेन सेम, यहाँ से कंपेयर करना है, लैम्डा आ जाएगा हमारे पास ना. तो क्या हो जाएगा, आर डॉट का मतलब x इंटू a1x हो जाएगा, ये b1y हो जाएगा, c1z हो गया, यहाँ लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z. ओके, यहाँ आ जाएगा d1 प्लस लैम्डा इंटू d2. So there is a Cartesian form. So it's your wish इसको learn करना है या नहीं, ठीक है. Remember this. Please let me know once it is done. We start करते हैं questions. Okay. Kush, shall we start in? नेक्स्ट करते हैं, ठीक है. अब इसमें फर्दर टाइप्स हैं काफी. टाइप 5th में ए टाइप करते हैं, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन
passing through the intersection of two given planes. Passing through the intersection of two given planes at a given point. ठीक है, मैंने आपसे कहा था हमेशा एक कंडीशन जरूर होती है, तो यहाँ कंडीशन इज plane is passing through a given point. So try a question. Find the equation of a plane. Find the equation of a plane through the intersection of the plane. Find the equation of the plane passing through the intersection of the planes r dot I cap plus 3j minus k is equal to 5, and r dot 2I cap minus j cap plus k cap is equal to 3, and passing through the point and passing through the point 2, 1, minus 2. Please try this one.
The equation is done. So r dot 3 plus 2j is equal to 8. Very good. Then please, Kush, start the next one. Here we have a different condition, passing through intersection of two planes and perpendicular to a given plane. Okay. So this question came in CBSE 2007. ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिस्कशन हम करते हैं. कंडीशन क्या हो सकती है उसके लिए. सपोज वी हैव दिस प्लेन. ठीक है, प्लेन की इक्वेशन पहले हम लेते हैं. r डॉट n1 is equal to d1, r dot n2 is equal to d2. ठीक, I'm not talking about the intersection of plane. I'm just discussing about the perpendicular. Now if these two planes are perpendicular, ठीक है, फर्स्ट प्लेन ऐसे कर देते हैं. ये p1 है, इसका जो नॉर्मल होगा दैट इज n1. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एक और प्लेन है. ठीक, नाउ सेकंड प्लेन इज दिस सपोज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. ठीक है, दिस p2, तो उसका जो नॉर्मल होगा दैट इज n2. सो अगर प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होते हैं. इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होते हैं. सो n1 डॉट n2 जो होगा इज इक्वल टू 0. ठीक है, दिस इज अ जनरल कॉन्सेप्ट, नॉट अबाउट द इंटरसेक्शन. अब इंटरसेक्शन की आपको इक्वेशन पता है. पुट दिस कॉन्सेप्ट इन इंटरसेक्शन. ठीक है, now try this and let me know if you have any doubt.
Okay, question, you get the answer. 51 plus 15 minus 50 plus 173 is equal to 0. Very good question. This good. Next one. Next, try this. Find the Cartesian. Find the Cartesian as well as vector equation of the planes through the intersection of the planes r dot 2 I cap plus 6j cap plus 12 is equal to 0, and r dot 3 I cap minus j cap plus 4k cap is equal to 0, which are at a unit distance from the origin. The question came in CBSE 2005, then 2013. Okay, so we can say there's an important question. Please try this.
Please let me know if you have any doubt in this. R dot 8 4 8 k plus 12 सब ठीक है, but we are getting 8i let me see. So for this one, जब आपने lambda put किया, then you are getting r dot plus this plus lambda is equal to d1 plus d2. Okay, and lambda की value क्या आ रही है कुछ? Lambda is plus minus 2. Good, this is correct. Let me check. Okay, this is r. तो फिर दो आंसर आ रहे होंगे कुछ, है ना? आगे प्लस माइनस 2 है, then फर्स्ट करेक्ट है, दिस करेक्ट, ठीक है. Find the second answer also. Okay, good. That's correct. Very good. Okay, so we will start the next type. Next is type 6. Okay, and this is coplanarity of two lines. Okay. Suppose we have this line L1, which is R1 is equal to A1 plus lambda B1. Next we have L2. This is R is equal to A2 plus new B2. Okay. So first thing is, Kush, what is meant by coplanarity? Coplanarity. When we will say that the lines are coplanar. Same plane, very good. When they lie in the same plane. Okay. So ये हम line पहले कर चुके हैं. R is equal to A plus lambda B1. So what is A1? It is a point through which the line is passing. And what is B1? It is a vector which is parallel to the line. Similarly, L2, A2 is a point through which the line is passing, and B2 is a vector which is parallel to the line. So suppose we have first this line. Okay. And second, suppose we have this line. Second is this. This is L1. This is it. Okay. ये A1 given है. ये A2 given.
Now the vector parallel to this is this one. This is B1 और इसके पैरेलल वेक्टर हो जाएगा दिस इज B2. ये पॉइंट हो रहा है. इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें ये एक वेक्टर मिल जाएगा A2 - A1. ये सब सेम प्लेन की हम बात कर रहे हैं. सो प्रूफ हमें एक ये वेक्टर मिल गया A2 - A1. नाउ एक वेक्टर है B1 एंड B2. अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं B1 एंड B2 का, दैट विल बी गिवन बाय B1 क्रॉस प्रोडक्ट B2. ठीक है. अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है B1 क्रॉस B2, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन. B1 क्रॉस B2 will be perpendicular to the plane. So that means वो जो हमारे पास एक perpendicular आ रहा है this one. तो ये जो हमारा वेक्टर होगा this will be perpendicular to B1 and B2 and hence we can say this is also perpendicular to the plane. So इस plane में एक वेक्टर ये लाई कर रहे हैं A2 - A1, तो ये इसके भी perpendicular होगा. So we can say that A2 - A1 dot product with B1 cross B2, this is equal to 0. ये क्लियर हो कुछ? Okay, so this was the vector form. इसके बस कार्टेशियन फॉर्म और कर लेते हैं. Next is कार्टेशियन फॉर्म. तो अगर सब वैल्यूज को पुट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल A1 हम ले लेते हैं. A1 लेते हैं x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. Next B हम ले लेते हैं A2. Vector A2 is equal to x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap. ठीक है. और क्या चाहिए हमें? B1 चाहिए. So B1 ले लेते हैं A1 I cap plus B1 j cap plus C1 k cap. B2 भी ले लेते हैं A2 I cap plus B2 j cap plus C2 k cap. इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं. सो इसको जब अरेंज करेंगे इन डिटर्मिनेंट फॉर्म तो वो आपको ये देगा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 by A1 B1 C1 A2 B2 C2 and this is equal to 0. Okay. So better is to learn the vector form. थोड़ा सा lengthy है. So learn this one. फिर आप कर सकते हैं. Please note down this, confirm, then we will try some questions. Okay. Then please try this question. Question is show that the lines x plus 3 by minus 3 is equal to y minus 1 by 1 is equal to z minus 5 by 5 and x plus 1 by minus 1 is equal to y minus 2 by 2 is equal to z minus 5 by 5 are coplanar. Please try this.
कुछ please let me know, okay, once this is done. Okay, good, great. Now next, अब एंगल बिटवीन द प्लेन्स तो इन्होंने रिमूव कर दिया है, ठीक है, वो तो सिलेबस में नहीं है। कौन से पोर्शंस आपको रिमूव करने हैं? एक्सरसाइज 11.2 में हमने मार्क कर लिया था, 11.3 अब करते हैं, ठीक है। 11.3 में क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करना है, एंड क्वेश्चन 13 का ए और ई पार्ट ये नहीं करना है, डिलीटेड, ठीक है। 11.3 में क्वेश्चन 12 नहीं करना है, 13 का ए ई पार्ट नहीं करना है, ठीक है। So please mark this. Next. अब एंगल बिटवीन द प्लेन्स कुछ भी नहीं था, पता नहीं क्यों उसको डिलीट किया, ठीक है। और थोड़ा सा लिमिटेशन आ रहा भी है हमारे ऊपर, कुछ क्वेश्चंस में वो कॉन्सेप्ट यूज हो जाता था, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन पे डिस्कस नहीं करेंगे, एक और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सो सपोज सेकंड प्लेन इज दिस वन, ठीक है। अगर इस प्लेन की हम बात कर रहे हैं फॉर दिस वन, ठीक है, इसका जो एक परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल वेक्टर होगा, दैट इज लाइक दिस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके नॉर्मल वेक्टर की, तो एक नॉर्मल वेक्टर यहाँ हो जाएगा, इसका n1, ठीक है। सिमिलरली अगर इसकी बात करते हैं, दिस इज n1, ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके एक n1 हो जाएगा, दिस इज n2, ठीक है। सो द समरी इज कि अगर हमें चेक करना है कि टू प्लेन्स परपेंडिकुलर, ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, इसको ही डिस्कस करते हैं। इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, if two planes if two planes are perpendicular then n1 dot n2 0 होगा, ठीक है। if two planes are n1 n2 आपको पता है, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर्स, if two planes are parallel अगर हैं तो n1 is equal to lambda times n2 हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं यार, थोड़ा सा क्लियर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक प्लेन है, हाँ, तो इन दिस केस अगर हम यहाँ बात करें तो ये जो हमारा प्लेन है इसके एक परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, लेट दिस बी n1, ठीक है। अब ये जो सेकंड प्लेन है इसके भी एक परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा, दिस इज n2, ठीक है, ये n2 हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, ये हमारे प्लेन है, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, दिस वन, दिस थीटा, ये p1 हो गया, ये p2 हो गया, तो इनके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। अब थोड़ा सा हम और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ऑफ एंगल्स, तो ये हमारे टू नॉर्मल वेक्टर्स है, ठीक है। अगर ये थीटा है, दिस इज n2, दिस इज n2 एंड दिस इज n1, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस थीटा, है ना, ये कंप्लीट 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, इसकी बात करें, ये कि जो कंप्लीट है, दिस कंप्लीट इज 90, दिस कंप्लीट इज 90, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, this will give you theta. So actually the angle between the two plane is exactly the same as the angle between the two normals. तो अगर दो प्लेन गिवन है, हम उनके नॉर्मल के बीच में एंगल फाइंड कर लें तो वो एंगल सेम होता है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन द टू प्लेन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना था n1 n2 में, बट वो रिमूव हो गया, तो उसको हम नहीं कर रहे हैं।
अदरवाइज क्या होता है, cos थीटा फाइंड कर लेते हैं आगे। बट हाँ, ये दो पॉइंट्स कुछ क्लियर मेंशन नहीं है, तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं कि अगर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, पैरेलल है तो n1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ कुछ? ओके, सो प्लीज ड्रॉ दिस कुछ, नोट डाउन दिस, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके गुड, अभी करते हैं, ठीक है? कुछ पहले कंप्लीट किया ना सारे टॉपिक्स, फिर जो डाउट्स हैं एक साथ डिस्कस कर लेंगे, है ना? क्योंकि अभी एज पर द एनसीईआरटी 2 टॉपिक्स हमारे रह गए, बट फिर फर्दर उनमें भी टाइप्स हैं, तो उसको कंप्लीट करके फिर एक साथ कर लेंगे, ठीक है? प्लीज लेट मी नो कुछ इफ दिस इज कंप्लीटेड। ओके, shall we start next? Okay, good. Next is distance between a point and a plane. Between a point and a plane. Okay. Distance हमें find करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? We have this x, we have this y, and we have this z. Okay. Suppose ये एक plane है हमारे पास. एक plane है, this is P1. ठीक है? इसकी इक्वेशन है r dot n1 is equal to d. ठीक है? This is the equation of the plane. So again d1 is not the perpendicular from the origin, ऐसे करते हैं, so capital कर लेते हैं. So this is r dot n is equal to d1 and d is not the distance from the origin. ठीक है? ये फिर d ले लेते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे इसको. Now we will draw a plane which is parallel to this plane. ठीक है? इसके parallel होगा. And point A lie here. एक point है, point A. ठीक है? उसका position vector given है, that is A. And this plane is parallel to this one. Suppose ये P2 plane है, इसमें एक point है. अब अगर हमें distance from the origin चाहिए, तो हम क्या करेंगे? R dot for this one, for the same one, अगर हमें distance from the origin चाहिए, तो हम इसके magnitude से इसको divide कर देंगे. Okay, so we will get d by magnitude of it. अब अगर हमें इसकी equation find करनी है, एक point तो हमें मिल गया, तो equation क्या हो जाएगी? For P2 R minus A. अब एक वेक्टर चाहिए which is perpendicular to this. Now this plane is perpendicular to this one. So अगर इसका एक वेक्टर n है जो इसके perpendicular है, तो वो इसके भी होगा. तो ये नॉर्मल वेक्टर हम यूज कर सकते हैं. is equal to 0. तो यहाँ हमें मिल जाएगा r dot n minus a dot n is equal to 0. और फिर ये हमें मिल गया, this is r dot n is equal to a dot n. इतना क्लियर हुआ कुछ? Okay. Again, this is not the distance from the origin. तो distance के लिए हम क्या करेंगे? इसके magnitude से इसको divide कर देंगे. A dot n by magnitude of n. Now this is the distance from the origin. Let this be first. This be second. ठीक है? Now this is the distance from the origin. तो अगर हम बात करें यहाँ, ठीक है? तो इसका जो distance from the origin है,
इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है दैट इज दिस वन फॉर दिस प्लेन P2 दिस। इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका भी जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है वो ये है, दोनों पे प्लेन्स पैरेलल है, ठीक। सो अगर हम इसे फाइंड कर रहे हैं दिस डिस्टेंस, तो अगर हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा इसको लाइक दिस, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर है क्योंकि दोनों प्लेन्स पैरेलल है, अगर इसके भी ये लाइन परपेंडिकुलर है इसके भी होगी, लेट दिस बी O, दिस इज N, लेट दिस बी P। सो ये आपके पास OP है एंड दिस कंप्लीट इज OM। सो OM कितना है? OM is this one, D by magnitude of N। OP कितना है? This one। तो अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए, अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी फाइंड? हम इस कंप्लीट में से इस डिस्टेंस को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया। अब नाउ इफ दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस वन, तो अगर ये डिस्टेंस भी हम फाइंड करें बिटवीन द पॉइंट एंड द प्लेन तो सेम डिस्टेंस होगा ये, ठीक है। सो वी कैन से डिस्टेंस बिटवीन distance between the point distance between the point A and plane P1 is, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्या करना है इसमें से A डॉट एन में से A डॉट एन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ये क्या था? ये P2 था, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लिया इसे, तो ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव से डिफरेंस नहीं आएगा, बाय D magnitude of n। So this we can say A dot n minus D by magnitude of n। So this is the distance between the point and the plane। ये पॉइंट क्लियर हो कुछ? ठीक है, हम एक्चुअली ये फाइंड कर रहे थे, हमने यहाँ से कर लिया, ठीक है। दोनों डिस्टेंस सेम होंगे बिकॉज these two planes are parallel, ठीक है। हो गया। सो कुछ प्लीज नोट डाउन दिस and then we will try some questions। जी कुछ इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी है, ठीक है। नोट के लिए कुछ स्टार्ट करें नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म, ओके, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं कार्टेशियन फॉर्म। अगेन कार्टेशियन फॉर्म फिर लेंथी है, सो बेटर टू डू द वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, व्हाट इज द कार्टेशियन फॉर्म? हमारा जो प्लेन है दैट इज सपोज ax plus by plus cz is equal to d, okay। पॉइंट a है, this is what xi cap plus y1 j cap plus z1 k cap। नॉर्मल वेक्टर क्या है? ai cap plus bj cap plus ck cap। तो अगर हम यहाँ चेक करते हैं, यहाँ क्या था? a डॉट एन माइनस डी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ, तो इसकी अगर वैल्यू पुट करें, a डॉट एन का मतलब a डॉट एन दिस वन, तो ये कितना हो जाएगा? ax1 प्लस by1 प्लस cz1, फिर उसके बाद माइनस डी। अब ये थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ डी हमने राइट साइड लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में आगे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट दैट टू द राइट साइड, वरना फिर आंसर में मिस्टेक आएगी। सो माइनस डी आ गया बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन, एन मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके। दिस क्लियर कुछ? ओके, ठीक है, फिर ट्राई करते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस, देन वी विल ट्राई सम क्वेश्चंस।
Good. Start करें next. Okay. Now next is find the distance. Find the distance of the point. Find the distance of the point. 2i cap plus j cap minus k cap from the plane. r dot I cap minus 2j cap plus 4k cap is equal to 9. Okay, try this. Okay, Kush, good. That's correct. Please try this one. Prove that this plane has an intercept this at a distance of p units from the origin, and this is equal to, please prove this. Okay, Kush, very good. Then please try this. Show that the points I cap
minus j cap plus 3k cap and 3 into I plus j plus k cap are equidistant from the plane r dot phi cap plus 2j cap minus 7k cap plus 9 is equal to 0 and lie on opposite side of it. Opposite sides of it. Okay, please try this one. Kush, please let me know if you have any doubt in this. Okay.
लेट मी चेक, कुछ ऐसा होना तो नहीं चाहिए। क्वेश्चन यही था। लेट मी चेक दिस। That this point with this are equidistant. So 5 plus 2 minus 7. फर्स्ट कितना रहा है कुछ? ठीक है, सेकंड कितना रहा है? 13 तो नहीं आना चाहिए। ये ना 3 into this, so 3 5 15 plus 3 into 2 6 minus 27 plus 9। ठीक है, तो कितना हो गया? 15 and 6 21 minus 6 plus 21, so minus 6 plus 8 3। let me check। बाय जो भी मैग्नीट्यूड है 78। अच्छा, ये जो 37 for this is 21। ठीक, कुछ maybe 9 by under root 78। कुछ क्लियर है? ठीक है, now check the second one and lie on opposite sides of it. Please try this। ओके कुछ, आई विल ड्रॉ द फिगर फॉर दिस। ठीक है, और आप कर सकते हैं क्योंकि आपने इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस खुद किए, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। आई विल जस्ट ड्रॉ द फिगर। सो अब अगर वो कह रहे हैं अपोजिट साइड है तो हम ले लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये रहा, नेक्स्ट पॉइंट ये रहा, वो कह रहे हैं लाइन अपोजिट साइड एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब बता सकते हैं कुछ कैसे होगा सॉल्व? अब बता सकते पॉजिटिव नहीं नहीं नहीं, अपोजिट साइड है ना, तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है, मिड पॉइंट अगर फाइंड कर देंगे वो लाई करेगा ऑन दिस प्लेन, है ना। तो मिड पॉइंट फाइंड कर दीजिए, मिड पॉइंट को प्लेन में पुट कर दीजिए। अगर प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मिड पॉइंट, सो दैट मींस अपोजिट साइड लाई कर रहा है। ओके, डू दिस। Okay, good, very good. So कुछ as per the NCERT only one topic is remaining, ठीक है, बट है इसमें भी अभी भी काफी टाइप्स है। So we will do the questions in the next class, फिर hopefully Saturday complete हो जाएगा, Sunday फिर हम probability start करेंगे। ठीक है, so complete the NCERT and complete the assignments, फिर doubts भी हम Saturday discuss करेंगे। ठीक है, ठीक है, okay, Krish, you're welcome।